तो आज हम कुछ स्पेशल मैट्रिसेस की डायगोनलिटी की बात करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेट अस सी डायगोनलाइजेबिलिटी है ना। ऑफ सम स्पेशल मैट्रिसेस। तो ये रिजल्ट्स आप याद कर लीजिए, रिमेम्बर रखिए। और से रिलेटेड हमारे पास यू कैन से कि इम्पोर्टेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको आप याद रखेंगे तो इससे आसानी होगी हमें प्रॉब्लम्स के आंसर देने में, जो भी क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। पता चल। तो नंबर फर्स्ट अबाउट द रियल मैट्रिसेस के बारे में। तो दिस रिजल्ट वन, इफ लेट ए बी अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। एंड if u and v if a be a real symmetric matrix, and if u and v are eigenvectors corresponding corresponding to distinct eigenvalues values, okay, then definitely u and v will be orthogonal. What meaning of orthogonal? Their inner product with u and v will be equal to 0. So यू नो दैट कि ऑर्थोगोनल मीन्स कि अगर हमारे पास वी हैव दिस वेक्टर यू एंड वी, ठीक है, तो उसका जो इनर प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 0। एंड इट मीन्स दैट इफ यू हैव सपोज दैट कि हमने ये ले लिया, दिस इज योर x1 y1, सॉरी, तो x1 x2 ले लो, x1 x2, दिस इज y फिर से आ गया, दिस इज x3 एंड सो ऑन अप टू xn। तो थोड़ा सा कॉलम वेक्टर लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, है ना। तो राइटिंग दिस, तो निकालते हैं, तो इससे निकालेंगे। तो like this, I'm just taking the column vector, this is your x1 x2 up to xn। ये हमारे पास एक कॉलम वेक्टर हो गया। और v is also कॉलम वेक्टर like this is your y1 y2 and up to y।
Okay. Now, if you are taking the inner product of these two vectors, because this is a real symmetric, so this will be also real. So, what will be the inner product defined like this? This is U and V is defined like this. This is your uh, uh, this. I'm taking this is U dash V. U dash. ओके यू डैश वी मीन्स कि इसको हमने रो ले लिया, दिस इज योर x1 x2 अप टू xn, और इसको हमने कॉलम ले लिया, दिस इज y1 y2 अप टू yn। ठीक है, so from here you will get some like this x1 y1 plus x2 y2 up to this is your xn y, ठीक, and that will be equal to 0. Okay, so if these u and v are the eigenvector with respect to distinct eigenvalue lambda 1 and lambda 2, you can say, ठीक है, these are distinct, तो इनके रिस्पेक्ट में ये इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में है, in that case u and v will be orthogonal. Okay. Okay now, हेलो, ओके, ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि हमारे पास अगर दो हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर्स हैं तो वो ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है, दे आर विल बी ऑलवेज ऑर्थोगोनल। ओके, नेक्स्ट, दूसरा रिजल्ट है, दैट इज रिजल्ट सेकेंड इज राइट हियर, कि लेट ए बी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स then there exists there exists an orthogonal matrix P such that P inverse A of P is diagonal. It's diagonal. ठीक है, तो they are saying if A be a real symmetric matrix, then there exists an orthogonal matrix P such that P inverse P is diagonal. ठीक है, तो this is saying we can say कि यही सेम, क्योंकि सारे के सारे हमारे पास ऑर्थोगोनल सारे वेक्टर्स होते हैं, तो दे आर पुट इट इन अ रो, ठीक है, या कॉलम में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो पी मैट्रिक्स मिलती है ऑलरेडी, दैट विल बी orthogonal matrix, and this P inverse AP, if you calculate this P inverse A of P, you will get a diagonal matrix. So in this case, you will say the real symmetric matrix is always orthogonally diagonalizable, क्योंकि जब डायगोनल मैट्रिक्स हमारी मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल बोलते हैं, ठीक है, तो रियल सिमेट्रिक, इट मीन्स अ रियल so this is real symmetric
real symmetric matrix is orthogonally orthogonally diagonal algebra. So whenever you see a real symmetric matrix, you will able to say that is diagonal algebra. ठीक है? That will be always diagonal algebra. And also this is the orthogonally diagonal algebra. Okay. Uh, Next is important result. So we can change the color. This is your result. ये बढ़िया रिजल्ट था, है ना? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो कलर इसका देखो इतना बढ़िया आ गया। तो हाइलाइटर है। ओके, तो रिजल्ट 3 इज सेइंग कि इफ द टू matrices if two matrices are similar, if two matrices are similar, then their DC term, DC T E R M, है ना? If the two matrices are similar, then their DC term are same. ठीक है? What meaning of DC term? D for determinant, D for determinant, determinant, D for determinant, and T for characteristic polynomial, characteristic polynomial, O characteristic polynomial, and T for trace, okay, and E for eigenvalues, and this R for rank। ये जो लिख रहे हैं विजिबल है आपको? ओके, तो मिनिमल पॉलिनोमियल। लेकिन ये और पेन की रिस्पेक्ट में जो है सिलो लिखता है मिनिमल पॉलिनोमियल। So, what this result is saying, if the two matrices are similar, their DC term, है ना? DC term will be equal. DC मतलब D for determinant, determinant will be equal, characteristic polynomial will be equal, will be same for the both matrices, and trace will be equal, eigenvalues will be same, and because if characteristic polynomial is same, then definitely the eigenvalues will be same, and the rank will be same, and the minimal polynomial is also same. So DC term, determinant, characteristic polynomial, and this trace
eigenvalues, rank, and minimal polynomial are equal for the similar matrices. This result is important. You always remember for the similar matrices. Okay. We'll have to change this one because it's not working properly. Okay. So next result, let us see. Result 4. If two matrices, if two matrices, if two matrices are equivalent, then they have same rank, then they have same rank, but need not have same eigenvalues. Characteristic and minimal polynomial. Uh, uh, the you know that difference between the similar and the equivalent matrices. So if the two matrices are equivalent, then they have same rank. Their rank will be same, but need not have the same eigenvalues, characteristic and minimal polynomial. Okay, जरूरी नहीं कि उनका जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम हो या मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो। और मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं सेम है तो आइगन वैल्यूज का भी सेम होना नीड नॉट। ओके, बट their rank will be same for the equivalent matrices. Okay. uh, if the two matrices are congruent, result number 5, what about this? So uh, if the two matrices are congruent, then they have same number of positive eigenvalues, but but need not have same. And characteristic polynomial, and minimal polynomial. So what is saying here कि हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस कॉन्ग्रुएंट हैं तो दे हैव सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। मतलब अगर उसके एक मैट्रिक्स के पास तीन आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो दूसरे मैट्रिक्स के पास भी तीन ही जो है हमारे पास पॉजिटिव आइगन वैल्यूज होंगी। बट दे आर नॉट सेम, नीड नॉट टू बी सेम, है ना। दे आर सेइंग कि बट नीड नॉट हैव द सेम आइगन वैल्यू। कि अगर कह दें कि एक के पास हमारे पास 1 and 2, these are two आइगन वैल्यूज विच आर पॉजिटिव, तो नीड नॉट टू बी कि दूसरे के पास भी 1 and 2 ही होगी, वो 3 and 4 हो सकती हैं बट पॉजिटिव ही रहेगी। तो काउंटिंग में जो है हमारे पास सेम होंगी। दिस इज कह सकते हो कि
हमारे पास सेम आइगन वैल्यूज रहेंगी इन काउंटिंग, है ना। तो इफ द टू मैट्रिसेस आर कॉन्ग्रुएंट देन दे हैव द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। और सेकेंडली the characteristic and minimal polynomial will be the same। ठीक है। तो let us see। Okay. Next, we are going to say result 6, that if A and B are two n by n matrices, such that anyone or both of them is non-singular, then we have AB and BA, ठीक है, are similar, and therefore their TC term will be equal, है ना। तो दे आर सेइंग कि अगर हमारे पास ए और बी, इनमें से एटलीस्ट एक भी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन देयर प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए विल बी सिमिलर। एंड इफ दे आर सिमिलर देन देयर determinant, their characteristic polynomial, their trace, their eigenvalues, and their rank and minimal polynomial, these are equal। Okay, we already know about the similar matrices। Okay, so AB and BA will be similar if at least one of A and B are non-singular। Okay, so next result 7, result 7 is saying कि let A and B or any two uh, n by n matrices, then their DC term DCTE DCTE only this DC term determinant, characteristic polynomial, trace and eigenvalues of AB and BA are necessarily same, but the rank and minimal polynomial may or may not be. So what the result is saying कि here A and B any matrices, they are not saying कि non singular है, singular है, कुछ भी matrix है,
So in that case, if you are taking the product AB and BA, we form two matrices AB and BA. And this AB and BA have the same, क्या क्या सेम रहेगा, उनका डिटरमिनेंट सेम रहेगा, ठीक है, उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम रहेगा, उनका ट्रेस सेम रहेगा, आइगन वैल्यूज विल बी सेम, इस फोर थिंग्स विल बी सेम, बट देयर रैंक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल मे और नॉट मे बी सेम। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर उनमें से एटलीस्ट वन इज नॉन सिंगुलर, देन you have the possibility, then AB and BA will be the similar matrices. Okay, so here, for any two matrices, if you are calculating AB and BA, you will get the these things is same for in both the matrices. Okay. Next, I'm going to write the result A, which is important one. That is, if I'm just saying, let this is A be n m by n matrix, and this B n by m matrix. Okay, such that this is m is lesser than n. Then, ठीक है, so this A is of m by n matrix and B is of n by m matrix. So obviously here AB is possible and BA is also possible, है ना, both the matrices का product जो है AB and BA matrices is possible, and I'm taking this is m is less than n, in the A the number of rows is less than number of columns. Okay, so uh, we have some observations, some results की determinant of AB, obviously बात है AB is possible, may or may not be zero, may or may not be zero. If you are taking the product AB, so you know that the when you're taking product of AB, the order of AB will be m by n. Okay, m by n. Okay, this will be, okay, this is m by n is multiplied with this n by m, so you will get the product is AB is possible and its order is m by n. So if I'm taking this as m is less than n, okay, so in that case, if you have you AB, then determinant of AB may or may not be zero, वो zero हो भी सकता है, नहीं भी, but determinant of BA will be must be zero if you have to calculating BA. So BA का मतलब है कि you are just multiplying n by m with m by n, है ना, and you will get the order of this will be n by, and that will be higher order. If I'm just saying कि हमारे पास A 1/2 टाइप की मैट्रिक्स है और जो B है दिस इज 2/1 की टाइप की मैट्रिक्स है, so this is your you can say this is your A, this is your B, because we are taking this m is less than n, so this is A1/2. When you're taking BA, you will get a matrix of order 2/2. Okay, and it means this is a higher order product matrix, you can say this is BA, and that always will be zero. Okay, so determinant of BA is must be zero. Okay, and number third, the trace of the both matrices will be same. The trace of AB is just equal to the trace of B, and the fourth result we have that non-zero eigenvalues of AB and BA are 6.
व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस रिजल्ट? एक्चुअली इफ वी हैव सम टू मैट्रिसेस एंड उनका प्रोडक्ट उनके बारे में हमें पता है, ठीक है। तो अगर हमका मतलब मान लो एक का ऑर्डर हमारे पास क्या है कि 1/4 है, सपोज दैट लाइक दिस, एंड है 4/1 है ना। या हम 2 हम ले सकते हैं, या 4/2 इस तरीके से ले सकते हैं। तो क्लियरली कि हमारे पास दो मैट्रिसेस बनेगी, एक तो ए बी बनेगी, ए बी विल बी 2/2 टाइप की बनेगी, और बी ए जो बनेगा दैट इज 4/4 ऑर्डर की बनेगी। अब हमको 4/4 ऑर्डर की आइगन वैल्यूज निकालना है, ठीक। तो हमारे पास ऑब्वियसली कितने डिग्री का बनेगा पॉलिनोमियल, कितने डिग्री की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, वो 4 डिग्री की बनेगी। अब 4 डिग्री की आइडियाज लगाना, ठीक है, कि वो उसमें कौन कौन सी आइगन वैल्यूज होगी, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी मदद ले लेंगे, हम इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी इस मैट्रिक्स की, वही इसकी भी होंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा, या फिर हमको कुछ अगर ये दोनों की दोनों नॉन जीरो हो गई, ठीक है, तो सो गुड, टू नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इसकी मिल गई। जब दो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज मिल गई तो बाकी हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा उसे डिवाइड करके हम अदर दो जो भी आइगन वैल्यूज रहेंगे उनको हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो द नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी आर सेम। तो इफ अगर कहीं ऐसा हमको मिल जाए 3 से मोर ऑर्डर की हमको पॉलिनोमियल मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि क्या ए बी और बी ए का कॉम्बिनेशन है क्या, वहां पर क्या मैट्रिसेस, सेपरेट मैट्रिसेस हमारे को दे रखे हैं क्या, इस तरीके से। ओके, so this is the result 8 we have done. So next result I'm just going to write here. So result 9, आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज लेट मी नो। So result 9, if A and B uh, and B are 3/3 matrices such that their DC term is same, then they are similar. This result is only hold for 3/3 matrices, ठीक है। सिमिलर मैट्रिसेस का डीसी टर्म तो इक्वल होता है, ये हमने जानते हैं। बट क्या दो मैट्रिसेस है उनके डीसी टर्म इक्वल है तो वो सिमिलर होंगी, ठीक है। तो ऐसा ओनली फॉर द 3/3 मैट्रिसेस इज फोल्ड, ठीक है, 3/3 ऑर्डर मैट्रिसेस। तो हाँ, अभी हमारा जो है मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है। तो आप लोग नेक्स्ट लिंक जो है, सेकंड लिंक, उससे आप मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मैं ये वाला मीटिंग बंद कर रहा हूँ, और वी विल मीट इन द अनदर मीटिंग। ओके।